Hi everyone, this is Ishita Sharma and these are my Balle Balle shots. I still remember that feeling. I was standing on the stage and everything was dark over there and they took my name. It was like, oh yeah, I was the first one. They took my name, and then the feeling is still in my heart and it was a proud moment. So I still feel teary-eyed because it was a very nice feeling. I can't express that in words, but it was wonderful. No, I did not expect that win because मैं उदा ही join कर लिया सीगा, because my mom and my sister they said me भी तू कर join, तू करके देख, and I always wanted to be in this beauty pageants. ते फिर मैं उसे गई and I didn't expect that, but it was lovely. The experience was lovely. जब मैं आई उदों ते I saw my mom and my sister. They were there and they were laughing and they were waving at me. तो मैं trophy लेके आई and the feeling was amazing. They said they are proud of me, and also like there were two guys. They came, we want a selfie. I was feeling like a celebrity at that time. Then मैं घर गई and my dad was super proud of me. So that was a life-changing moment for me. I had a trophy and I had the title, and that means a lot. My experience was amazing. मैनू सीगा नहीं भी मैं ज्वाइन करांगी उत्थे. So I was the youngest contestant. I was in 11th or 12th. ते like इन्ना नहीं पता हुंदा. So मैं उत्थे गई. I saw so many girls over there and मैं उन्हां तो सिक्ख्या. I've learned many things. ते उस टाइम मैं कह सकदी भी मैनू समझ आ रही सीगी भी किद्दां हुंदे ने pageants, किद्दां ramp walk करनी, how to wear dresses. I think the experience was wonderful and सारे नू ये चीज़ try करनी चाहिदी है भी किद्दां किद्दां की है. ते I think yeah, that was amazing. I think there were 30 girls over there in semi-final. They सारियां ही competitors सीगियां and they were like good in their own way. उन्हां दा अपना like walk करन दा, पान दा, अपने आप नू represent करन दा, बोलन दा, अपना तरीका सीगा, and I learned from every girl. तां मैनू लगदा नहीं सीगा भी कोई मेरा competitor है. I was my own competitor. भी हाँ इशिता, you can do it. तां it happened like that. Honestly दस्सां तां जदों मैं उत्थे like आंसर दे रही सीगी या मैं जदों रैंप वॉक चल रही सीगी, मैनू जजेस दी शक्ल नहीं दिख रही सीगी. It was dark over there, it was just lights. ते बाकी जे मैं like जिन्ना सानू दस्सिया गया, they were looking at भी तुसी किद्दां वॉक करदे हो, तुसी ड्रेसिस किद्दां पाईयां ने, how you talk, तुसी आंसर किवें कर रहे हो, भी तुसी की सोचदे हो, what do you think, and तुहाडा बोलन दा accent. And because the pageant was about beauty with a purpose, तां ओह देखदे सी तुहाडा purpose की है. So that was the main thing they were looking at. I look up to Aishwarya Rai Bachchan. She's my inspiration. Oh yes, मैनू like मेरे घर दे दसदे ने भी जदों मैं छोटी सीगी, जिवें बच्चों नूं पुछदे ने तुसीं की बनना चाहुंदे हो, ते I always used to say I want to be Miss India. ते बचपन तो ये they tell me जदों मैं 4-5 साल दी सीगी या उदों. So I love all these things. मैं हमेशा तो ही glamour world च आना चाहुंदी सी. So the first one is भी मैं ना बंदे नू predict कर दियाँ. Like मैं किसी नू जब first बारी मिलदी हाँ ना, मैं उन्हें पुछदी हाँ what's your zodiac sign या कुछ भी हुंदा ना, मैं उन्हें उस दा ना predict करन लग जाऊँ भी बंदे नू A पसंद है, O पसंद है. So I really believe in zodiac and stars. मैं ऐदा predict कर लेनी है भी बंदा ऐदा दा होगा. So yeah. Second, I believe in unicorns. I believe in fairy tales. ते मैनू सच्ची लगदा है there is a world जिथे fairies ने, there are like pink and purple sky, and yeah, I really feel like I dream about them. I really believe in them. Third is it's quite funny. ते like there are like घरे जिद्दां snacks पए हुंदे ने, है ना, मैं रात नू स्टडी करदी हाँ लेट, ते उत्थे पए हुंदे ने ते I munch them. ते सवेरे मेरे घर दे मैनू पुछदे ने भी किन्ने खादा, ते मैनू आदत है मैं तां नहीं खादा. So I have this thing in me भी मैं कहनी मैं तां नहीं कीता, मैं तां नहीं खादा. The fourth one is I cry over small things. जदों मैनू कोई outfit नहीं मिलती, मैनू चाहिदी हुंदी है, like मेरे च ठहराव नहीं हैगा. I want भी छेती आ जाए. कोई बंदे ने, मैं किसी बंदे दी वेट कर रही हाँ, I just want छेती आ जाए. I just cannot wait. मतलब ठहराव नहीं हैगा. And
ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਐਟ ਲਾਸਟ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਸਟਬਨ ਆਲਸੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਨੋ ਮੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੇਮ ਜੋਕਸ ਕਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ ਗੁੱਡ ਇਨ ਕਰੈਕਿੰਗ ਜੋਕਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਰੈਕ ਦੈਮ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਲੇਮ ਇਨ ਦੈਮ। ਸੋ if not in current profession, I would be an IAS. I'm very good at studies, so yeah. Okay, if we talk about physical thing, I really want to change my teeth. I don't like them much. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, I really want to change ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ patience ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, so I really want to change that thing in me ਵੀ patience ਆ ਜਾਏ। ਵੈਲ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਰਗੈਟ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਸਮਵਨ ਸੈਡ ਮੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ ਨਾਓ ਵੀ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ। ਵੈਲ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਮੀ ਇਨ ਮੋਰ ਕਲੋਥਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਐਂਡ ਮੇਕਅਪ ਬ੍ਰਾਂਡਸ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਮੀ ਦੇਅਰ। ਯਾ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੂ ਵਿਦਾਊਟ ਹੀਲਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਫਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵੇਅਰ ਹੀਲਸ, ਸੋ ਆਈ ਲਵ ਦੈਮ। So I really want to say to the girls that be you, be confident. अपने आप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ compare ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। just be yourself and live your life girls, you know, life ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, just do whatever you want to do, stay positive ਤੇ you are the best. You can follow me on Instagram, Ishita Sharma, and also you can follow me on Snapchat, it's isharma450. Thank you so much for the opportunity. Thank you. If you like this video, please like, comment and subscribe Balle Burli Magazine YouTube channel.